Good morning, student. Welcome to TSN Online English class. Let's begin with the very first chapter, that is a letter to God from our book First Flight. So, a letter to God. This is the second part of this chapter. Understand? So, previous chapter we read that Lencho was an honest and hard-working farmer, and he was shocked to notice that his crop was ruined in a whole hailstorm. Understand? So let's continue with this chapter. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. So सबके दिलों में यही था, मतलब लेंचो और उसकी फैमिली में, क्योंकि वो एक वैली में, मिडल ऑफ द वैली में रहते थे, सॉलिटरी. सो हेयर सॉलिटरी मीन्स अलोन. सॉलिटरी मीन्स अलोन. तो वो अकेले रहते थे उस वैली में. अंडरस्टैंड? तो देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. सो ओनली वन रे ऑफ सनशाइन देयर, दैट इज हेल्प फ्रॉम God, because when there is no hope, we still have one hope left, that is hope for God or help from God, right? So don't be so upset even though this seems like a total loss. So here Lencho tried to console his family कि don't be so upset. It seems like that we lost all the things, but please don't be so upset. And he said, remember one thing, no one dies of hunger. You must have heard a proverb कि कोई भी भूखे नहीं सोता है, मतलब कोई भूखा उठता ज़रूर है लेकिन भूखा सोता नहीं है. भगवान कभी किसी को भूखा नहीं सुलाता है. तो ये तो आप लोग सब जानते ही होंगे. अंडरस्टैंड? That's what they say, no one dies of hunger. That's what they all through the night Lencho thought only of his one hope, that is the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. See, throughout the night Lencho thought only of his one hope left, that is the help from God. But we know that no one can tell what is going on in your mind or conscience, right? But God can see that also. So here the conscience means an inner sense of right and wrong. Means what is right and what is wrong. हमें कई बार अंदर से, डीप अंदर से फील होता है कि what is right for us and what is wrong for us, right? So Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. So here Lencho जो क्या है, ऑक्स की तरह काम करता है. जैसे हम ऑक्स होता है वो अपने पीछे कुछ बांध कर और जब फील्ड में वर्क करता है तो शोइंग वगैरह का काम होता है, क्रॉप्स होती हैं. सो हेयर ऑथर कंपेयर द लेंचो विद द एनिमल, राइट? सो जैसे एक एनिमल काम करता है डे एंड नाइट, so just like animal, Lencho worked day and night in his field for his family. So but still he was literate enough to write, so he know how to write a letter. So वो letter लिखता है. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. So it was nothing less than a letter to God. So following Sunday पर वो एक letter लिखता है, किसको? God को, और वो post करता है. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. So what he wrote, God, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो so I and my family will go hungry whole year. So I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm ... So he stopped here to write. So वो क्या कहता है कि God, I badly need 100 pesos to sowing again to my field and to feed my family in this year. So I badly need 100 pesos and need a help from your side. So because the hailstorm, he stopped here. Why he stopped here? वो क्योंकि hailstorm is a
डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, सो जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, हाँ, गॉड की तरफ से होते हैं। वी थिंक लाइक दैट कि जो भी नेचुरल डिजास्टर होता है कि वहीं से होता है, दैट्स वाई ही आस्क्ड अ मनी फ्रॉम गॉड। सो इस वजह से वो यहाँ रुक जाता है। सो हेयर पेसोज इज अ करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। सो यहाँ पे पेसोज क्या है, करेंसी है, जैसे हमारी करेंसी होती है रुपीज़, हम बोलते हैं 100 रुपीज़, डॉलर भी एक करेंसी है, ठीक है, यान भी एक करेंसी है, सेम लाइक दैट पेसोस भी एक करेंसी है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still trouble, उसने लेटर पोस्ट कर दिया, आफ्टर पोस्टेड ही स्टिल, वो फिर भी ट्रबल में रहा। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और पोस्ट ऑफिस में वो लेटर पोस्ट करता है, मेल बॉक्स में पुट कर देता है, मेल बॉक्स में डाल देता है। ओके, so here one of the employees who was a postman and also helped at the post office, so um, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. So अगर हमें पता चलेगा कि कोई लेटर लिख रहा है गॉड को, तो हम भी हंसेंगे। तो सेम एज जो पोस्ट ऑफिस था, जो एम्प्लॉयज थे, वो सब भी देखते हैं कि द लेटर एड्रेस टू गॉड, सो ही मेड फन ऑफ द मैन हु हैड रिटन द लेटर, but here never in his career as a postman had he known that address. So he said कि in my whole career I have never seen कि कोई भी किसको लेटर लिख रहा है, गॉड को लेटर लिख रहा है, he never seen. So the postmaster, a fat, amiable, see students, look at here amiable means friendly, क्या नेचर था, फ्रेंडली। सो इन दिस लाइन द ऑथर ट्राइड टू डिस्क्राइब और सम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर कैसा था, फैट एंड एमिएबल फेलो एंड ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, सो ही ऑल्सो स्टार्ट लाफिंग, बट his boss was a very serious man, so he didn't take the letter lightly, understand, he didn't take the letter lightly. Then but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with गॉड। सो वो जो लेटर है वो डेस्क पर अपनी टेबल पर रखता है, एंड ही विश्ड and he was very much impressed by the extreme faith of the man, and he wished to have the same faith with God. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. So he didn't want to break the faith of the writer. Okay, so he got an idea, means the postmaster got an idea that he कि उसे एक लेटर लिखना चाहिए, means at the end he decided to answer the letter. Okay, so but when he opened it, it wasn't evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. So जैसे ही वो उस लेटर को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे वो देखते हैं कि उसको जो लेंचो है, मीन्स जो राइटर है, उसको गुडविल से ज़्यादा और इंक और पेपर से ज़्यादा ही बैडली नीड व्हाट, मनी. सो बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. सो यहाँ पे जो उसने प्रण लिया था वो स्टक हो जाता है कि नहीं यार, मैं तो अपने रिजोल्यूशन पे ही स्टक रहूँगा उसी पे. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. सो वो अपने एम्प्लॉयज़ से मनी के लिए, मीन्स कलेक्ट मनी करने के लिए पूछता है. asked for money from his employee, he himself gave part of his salary. So he also contributes some money from his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. So he collected some money from his employees because it is an act of the charity. So everyone was so obliged to did this thing, understand. So it was impossible for him to gather together the 100 pesos. So for the postmaster or postmen or his employees, it quite difficult for them to collect or to gather
the 100 pesos. So he was unable to send the farmer only a little more than half. So at the end, he was sent only half of the money, means more than half, means 100 pesos यहाँ पे लेंचो ने डिमांड की थी, तो उन्होंने 50 प्लस कुछ पैसों का अरेंजमेंट किया, पेसोस का अरेंजमेंट किया, एंड ही सेंड टू द लेंचो. He put the money in an envelope and addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature of God. At the end वो सिर्फ एक signature करते हैं God के, और लेंचो को जो मनी है, जो 50 प्लस पैसोस उन्होंने कलेक्ट किए थे, पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉयज, उन्होंने वो लेंचो को सेंड कर देते हैं. ओके, सो वी विल बी कंटिन्यू this chapter in our next part. Thank you.